Bismillahirrahmanirrahim. I am Shafiq Ahmed from English Department of Kips College, Firozpur Road campus. Today I am going to cover chapter number 13 from novel Goodbye Mr. Chips, which is basically written by James Hilton. We have already learnt in chapter number 12 that Ralston quit Brookfield School in 1911. After that, Mr. Chips also resigned in 1913, and then war years started. Basically, in this chapter, James Hilton is discussing about Mr. Chips' memories of war. First World War basically start in July 28, 1914, and it ended in November 11, 1918. To begin with, we first of all should learn about Mr. Chips' feelings. What were Mr. Chips' feeling when there arose First World War? Mr. Chips basically had mixed feeling. Sometime he became shocked due to war, due to some event we can say that, and sometime due to some pleasant event related to war, he became optimized, hopeful. So once one of Mr. Chips' old student came to Mr. Chips and he asked Mr. Chips a question about ending of war. He asked Mr. Chips, sir, according to your point, when will the war end? So Mr. Chips then gave very sherry answer, very interesting answer. Are you thinking to join up Forrester? Basically, the name of that student was Forrester, and Forrester was the smallest boy Brookfield had ever. He was 4 feet high above his muddy football boots. Actually, this was just a joke that Mr. Chips made to Forrester about joining of war, but in some other context it was not a joke. It was very tragic because later on Forrester died. He died over Cambrai in 1918. So the character of Forrester is a very interesting character, and it is basically asked severally in board papers. Now Mr. Chips shared his views about war to Blades. Who was Blade? Blade was the head of schoolhouse, hostel. So he was 18 years old, and he was also having training in cadetship, military training basically. Mr. Chips shared his views about First World War to him, that the sacrifices of one generation should not cancel out the other generation. Actually, here Mr. Chips is referring 100 years ago's war, which broke out between France and Great Britain. Now Great Britain is fighting a war with France against Germany. That's why Mr. Chips refer 100 years ago, Napoleonic War, we can say that. Against this question, what type of response Blades gave? He just gave a smile. He smiled and said nothing. He was just thinking that Mr. Chips had very queer ideas. Now we move towards the next concept, which is related to year 1895 according to our textbook. In year 1915, armies of Great Britain stuck in deadlock, to say they got delayed to the Sea of Switzerland, and there were brought a lot of changes in Brookfield School. Now there is a very important question related to this chapter. What changes were brought in Brookfield School during World War I? This can also be asked, this question can also be asked as how did Brookfield contributed to World War I?
So changes that were brought, first of all, the military camp of British Army appeared. They sprang up near Brookfield and they used Brookfield's playing field for training and exercise. So their soldiers use training for their training the field of Brookfield for their training. Moreover, they brought many swift changes, development in OTC. OTC, Officer Training Corps. After that, a lot of Brookfield teachers and boys joined Brookfield, joined First World War, and they lay their life for their country. So, in this way, Brookfield School contributed in war, First World War. After that, when someone died during war who belonged to Brookfield School, Mr. Chatris read out the name of the students who died during war. After on every Sunday night after evening prayer. So this is very important question. What did Chatris read out on every Sunday night? Ralston read out names and short biographies of the boys and masters who died during World War I. And this was basically very moving. This was very shocking to read the name of those students. One day he read the name of 23 students to 23 members of Brookfield who died during Battle of Somme in 1916. Next on, after that, one day there is another memory related to Mr. Chips. One day Chatris visited Mr. Chips at Mrs. Wickett's house. He actually requested Mr. Chips to rejoin Brookfield. So there is also very important question related to this chapter. Why did Chatris visit Mr. Chips at Mrs. Wickett's house? Actually, he visited so that he could request Mr. Chips about rejoining Brookfield. He shared some of his problems which he was facing during First World War related to, we can also prepare a question here related to difficulties of Chatris which he faced. First of all, when he met Mr. Chips, he looked overworked, overworried and ill. This was his physical appearance. After that, he said to Mr. Chips, to tell the truth, Mr. Chipping, I'm not having easy time here. You know, I'm 39 years old. I'm also unmarried still. I have also diabetic, and I could not even pass the blindest MO, medical officer certificate. Even I cannot pass that. Why then I pin up a medical certificate outside my room? So this was the problems. He further shared his problem with Mr. Chips. He said that Ralston actually filled a lot of students and teachers in the school, and they all were very good. But issue is that so we can here discuss that. Mean राल्स्टन ने काफ़ी सारे ऐसे स्टफ से भर दिया स्कूल को कि जो कि सारे के सारे मैनेजेबल नहीं है, उनमें ठीक है, लेकिन इशू इस चीज़ का है कि मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर ने ज्वाइन कर लिया है वॉर को, और पीछे मुझे खुद को क्लासेस
टैकल करना पड़ती है और रात गए तक मुझे काम करना पड़ता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ब्रेक डाउन हो जाऊंगा। तो इस तरह से मिस्टर चिप्स से ही रिक्वेस्टेड मिस्टर चिप्स कि मिस्टर चिप्स आपका रीजॉइन करने के बारे में क्या ख्याल है, अगर इफ़ यू फेल्ट इक्वल टू इट, तो अगर आप इसके खुद को इक्वल समझते हैं तो प्लीज़ आप रीजॉइन कर लें। आप कोई बड़े काम ना करना, जस्ट ऑट मैं आपको छोटे छोटे से काम दूंगा, आप जो दी चाहे पढ़ा लिया करना, लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में आप हेल्प आए, क्योंकि आप, मैंने सुना है यहाँ के सबसे ज़्यादा जो है पुराने टीचर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और तुम ऑल रोप्स को जानते हो जो ब्रुकफील्ड की हैं। और कभी भी अगर कोई इन रोप्स में से अगर कोई ऐसा इशू जो कि ब्रुकफील्ड की ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करे तो आप इजीली वो टैकल कर लोगे। तो ये रिक्वेस्ट की सी उसने चैट्रिस ने मिस्टर चिप्स से ब्रुकफील्ड को रीजॉइन करने के। बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आस्क सेवरल टाइम इन बोर्ड एग्जाम्स। सो दिस वाज द रिक्वेस्ट, और आफ्टर दैट मिस्टर चिप्स आंसर्ड, मिस्टर चिप्स ने जवाब दिया ब्रेथलेसली, वेरी एक्साइटेडली एंड विद हॉली जॉय, बड़ी सेकर्ड एक खुशी के साथ उसने एक आंसर दिया। उसने क्या कहता कि आई विल ज्वाइन, आई विल कम, मैं स्कूल को ज्वाइन करूंगा। सो बेसिकली दीज वर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। और एक दफ़ा मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट सिंपली किस सीक्वेंस में है। हमने जस्ट पढ़ा है कि कॉन्सेप्ट में हम लोग जो है हमने पढ़ा कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, मिस्टर चिप्स की जो फीलिंग होती है वो आमतौर पर वो मिक्स होती हैं, शॉकिंग भी होती हैं, समटाइम जो है जी वो होपफुल हो जाता है जंग के बारे में। और आफ्टर दैट एक बच्चा मिस्टर चिप्स से पूछता है, फॉरेस्टर के बारे में पूछा, ये स्मॉलेस्ट बॉय थे, रिमेंबर दैट डू नॉट मिक्स फॉरेस्टर विद फॉकनर विच वी हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 8। फॉकनर और फॉरेस्टर में डिफरेंस है, तो समटाइम ऐसा होता है स्टूडेंट इनको मिक्सअप कर देते। तो फॉरेस्टर सबसे छोटे कद वाला बच्चा था जिसने मिस्टर चिप्स से वॉर के बारे में पूछा था, तो बाद में ये मारा गया था कैम्ब्रॉय की जगह पर। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि मिस्टर चिप्स ने अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर किए थे। ये पहला बच्चा था वैसे भी, तो मिस्टर चिप्स से अपने व्यूज़ शेयर किए थे फॉरेस्टर ब्लेड से। ब्लेड के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा हमने, ब्लेड का क्या कैरेक्टर था स्कूल में, इसके बारे में आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट मैंने आप लोग को बताया कि आर्मीज जब 1915 में ये क्लेंच हो गई थी, ये स्टक हो गई थी वो स्विट्ज़रलैंड की तरफ जाते हुए डेडलॉक में, तो इस वजह से फिर ने ब्रुकफील्ड में काफ़ी चेंजेस लाना पड़ी थी। वहाँ पर उसके इर्द गिर्द मिलिट्री के कैंप जो है वो स्प्रिंग अप हो गए थे, और उन्होंने ब्रुकफील्ड के जो फील्ड जो है उनको यूज़ किया किसके ट्रेनिंग के लिए और अपनी एक्सरसाइज वगैरह के लिए। देन मैंने आपको बताया कि जो बच्चे मारे जाते थे वर्ल्ड वार के दौरान, उनके चैट्रिस उनके नाम और उनकी छोटी सी सवाने उमरियाँ पढ़ा करता था, जो उनके बारे में कौन स्टूडेंट क्या था, कौन सी क्लास में पढ़ता था और आज वो मारा गया है। ये बड़ा ट्रेजिक सीन हुआ करता था। तो इन चीज़ों के बारे में आम तौर पर जो जब वो पढ़ा करता तो मिस्टर चिप्स काफ़ी ज़्यादा जो सैड भी हो जाया करता था। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा के भी मिस्टर चिप्स एवरी संडे नाइट को क्या रीड आउट किया करता था। आफ्टर दैट मैंने आप लोगों को बताया कि 1916 में चैट्रिस ने मिस्टर चिप्स से रिक्वेस्ट की थी टू रिजॉइन ब्रुकफील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ द बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि उसने क्या रिक्वेस्ट की थी उससे रिजॉइन करने की। उसने कुछ अपने प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को भी शेयर किया था दैट ही वॉज बेसिकली फेसिंग एट ब्रुकफील्ड। उसने जिस तरह से इनको शेयर किया, मैंने आपको ओवर वर्क दिखाई दे रहा था तो वो थका हुआ था, उसने अपनी बताया कि वो अभी अनमैरिड भी है। तो ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया और इस बात के ऊपर मिस्टर चिप्स ने आपको जो बड़ी हैप्पीली आंसर किया कि वो ज्वाइन करेगा। Okay, well, now we discuss about the second part of our lecture, learning objective, which is related to questions. Here are the questions related to this chapter. These questions are basically taken from past papers and very important questions, and this will also be your learning assignment. First question, who was Forrester and what did he ask चिप्स? फॉरेस्टर कौन था और इसने चिप्स से क्या पूछा था? We have discussed it already. After that, second question, describe Brookfield services during First World War.
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रुकफील्ड ने कौन कौन सी सर्विसेज परफॉर्म की थी, मैंने आपको बताया उसके टीचर्स ने ज्वाइन की थी, वो किया था वॉर को। आफ्टर दैट उसके ट्रेनिंग फील्ड जो थे उनको, उसके जो प्लेइंग फील्ड था उनके ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु वाज ब्लेड्स, ये मैंने आपको बताया था हॉस्टल का यानी कि हाउस मास्टर था ये। 18 ईयर इसकी एज थी, कैडरशिप में ये ट्रेनिंग मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा था। मिस्टर चिप्स ने जंग के बारे में व्यूज़ अपने शेयर किए थे इसके साथ, ब्लेड के साथ। After that, question number 4 is what did Chester read out on every Sunday? हर संडे नाइट को क्या रीड आउट करता था? नेम एंड शॉर्ट ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द स्टूडेंट्स और टीचर्स हु डाइड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। And after that, question number 5, what administrative difficulties did Chatris face ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1? कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज थी जो वो वर्ल्ड वार के दौरान फेस कर रहा था, तो हम लोगों ने इनको भी पहले से डिस्कस किया हुआ है। आफ्टर दैट, व्हाट रिक्वेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट रिक्वेस्ट डिड चैट्रिस डू टू चिप्स in July 1916? This question can be asked in different ways. Why did Mr. Chips go to Mrs. Wicket's? What request did he made? What happened 1916? When did Mr. Chips rejoin Brookfield? So this question can be asked through different statements. Now, third part of our lecture is related to synonyms, which are basically taken from past papers. These are the synonyms which are given in your past papers. Must learn the short answers and these specific synonyms. Conceal, first synonym. This synonym is basically asked 3 times in board papers. Conceal means hide something, to cover something. After that, strenuously, laboriously, odiously, diligently. We can say that. Further synonym you can discuss according to your textbook or some other source. And hysterical, mad, lunatic, frenzied, पागलपन होना, then strength, bear, tolerate करना, endure करना, बर्दाश्त करना, tragically, sorrowfully, अफसोसनाक, दुख, गमनाक, gloomy होना, clench, stuck, gripped, जकड़े जाना, पकड़े जाना, तातुल का शिकार हो जाना, optimism, hope को कहा जाता है, पुरउम्मीदी। आफ्टर दैट, बीटन का यहाँ पर मतलब पनिश, वैसे इसका होता है whip, आपने पढ़ा, थ्रैश करना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पर चैप्टर में इसकी जो सेंस, इस सेंस में यूज़ हुआ है डिफीट, हार जाना। सिंपथाइज्ड, फील सॉरी, अफसोस करना। आफ्टर दैट, ट्रायल, और ट्रायल मीन सिलेक्शन कंटेस्ट, किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए जो मुकाबला होता है तो फिर किसी को, उसके लिए हम ट्रायल का वर्ड यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट, रोप इज बेसिकली यूज्ड इन द फॉर्म, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, कनेक्शन, ट्रिक, ये एक वे होता है, अंदाज, ट्रिक को कहते हैं आप लोग रोप। वैसे रोप रस्सी को भी कहा जाता है, कॉर्ड को या स्ट्रिंग को। देन शैरी मीन जॉली, इंटरेस्टिंग, मजाया आंसर किया मिस्टर चिप्स ने टू, हमने पढ़ा फॉरेस्टर्स क्वेश्चन। स्लैकर, आइडलर, शर्कर, तो ये आमतौर पर स्लगिश आप कह सकते हैं, आइडलर, स्लगिश, सुस्त। सब्स्टिट्यूट इज आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम। Substitute mean replaced, alternative, तो alternative, मुबादल। After that, sensational, exciting आप लोग कह सकते हैं, thrilling कह सकते हैं आप लोग, पुरजोश। और springing, appearing, military camp sprang up near Brookfield, तो sprang यानी कि वहाँ पर वो डेवलप होना शुरू हो गए थे, उभरना शुरू हो जाना या जाहिर होना शुरू हो जाना। आफ्टर दैट, ब्रेथलेसली, वैसे तो अब ब्रेथलेस हो जाना सांस का फूलना होता है, बट हियर ईगरली, एक्साइटेडली, बड़े पुरजोश अंदाज में मिस्टर चिप्स ने जवाब दिया था उसके क्वेश्चन का जो कि उसने किया था टू चैट्रिस अबाउट रीजॉइनिंग ऑफ ब्रुकफील्ड। स्टूडेंट, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. If you have any question, you can discuss these questions with your learner. Thank you.